नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SHJ टेकफिक्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लैपटॉप का सोल्डर्ड कीबोर्ड रिप्लेस, यानी जिसमें कीबोर्ड मदरबोर्ड या टॉप केस में वेवर्स या प्लास्टिक मेल्ट से चिपका होता है। नॉर्मल कीबोर्ड रिप्लेस से ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग और रिस्की होता है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैपटॉप को कंप्लीटली पावर ऑफ करेंगे। बैक कवर के सारे स्क्रू ओपन करेंगे। रबर पैड के नीचे हिडन स्क्रू होते हैं, उन्हें भी चेक करो। प्रायर टूल से ओपन कर लो। बैटरी रिमूवेबल है तो निकाल दो, नहीं तो मदरबोर्ड से कनेक्टर अनप्लग कर दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिकॉशन का ध्यान रखो। अब हम बैटरी कनेक्टर, स्पीकर वायर, डिस्प्ले केबल, कीबोर्ड और टच पैड, FPC केबल सब डिस्कनेक्ट करेंगे। इससे मदरबोर्ड कंप्लीटली फ्री हो जाएगा। उसके बाद मदरबोर्ड के अराउंड 5 से 10 स्क्रू होते हैं, उन्हें ओपन करके मदरबोर्ड को जेंटली ऊपर उठाओ। जोर से पुल मत करो, कोई केबल चिपक सकती है, इसलिए सबसे पहले सारी केबल मदरबोर्ड उठाने से पहले सबसे पहले सारी केबल्स को रीचेक करो। उसके बाद मदरबोर्ड उठाना है। मदरबोर्ड निकालने के बाद आपको पूरा कीबोर्ड बैक साइड से दिखेगा। ये राइवेटेड या प्लास्टिक मेल्ट स्टड से लगे होते हैं। यही सोल्डर्ड मेल्टेड कीबोर्ड होता है। ठीक है, अब हम एक शार्प टूल, कटर, शोल्डर्ड आयरन या रोटरी टूल से ये प्लास्टिक वेल्डिंग पॉइंट्स को रिमूव करेंगे। स्लोली एक एक पॉइंट को कट करो। ध्यान रहे बेस प्लेट डैमेज ना हो। ठीक है, सारे रिवर्ट्स खोलने के बाद कीबोर्ड इजीली निकल जाएगा। अगर कहीं ग्लू लगा हो तो फ्लैट टूल से जेंटली लिफ्ट करो।
न्यू कीबोर्ड को सेम अलाइनमेंट में रखो। अब हम दो तरीके से इसे फिट कर सकते हैं। पहला तरीका है डबल साइडेड थिन एडजस्टिव टेप के जरिए, दूसरा हॉट ग्लू गन, फेविबॉन्ड या प्लास्टिक रबड़ पिंस से। ठीक है। इंश्योर कीबोर्ड फ्लेक्सिबल शीट फोल्ड नहीं हो। कीबोर्ड के रिबन केबल को कनेक्टर में प्रॉपर्ली लॉक करो। ये छोटी मिस्टेक में कीबोर्ड काम नहीं करेगा। मदरबोर्ड को सेम अलाइनमेंट में रखो, सारे स्क्रू वापस लगाओ, डिस्प्ले केबल, टचपैड, स्पीकर, कीबोर्ड सब कनेक्ट करो, बैक पैनल को प्लेस करो और सारे स्क्रू वापस टाइट करो। बैटरी रिकनेक्ट करना नहीं भूलना। इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल।
अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।